गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। सारे टॉपिक्स को पहले हिंदी में डिस्कस किया जाएगा, फिर सारे टॉपिक्स को इंग्लिश में डिस्कस किया जाएगा। तो जिन्हें इंग्लिश की डिस्कशन देखनी है वो नीचे चैप्टर्स खोलकर उसमें डायरेक्टली जो है वो टाइम स्टैम्प जो है उसको टच करके डायरेक्टली जा सकते हैं जहाँ से इंग्लिश की डिस्कशन शुरू हो रही है। तो पहला टॉपिक हमारा है रानी गैडिनलियो। तो यूनियन होम अफेयर्स मिनिस्टर जो है उन्होंने रानी गैडिनलियो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम जो है मणिपुर में उसको इनाग्रेट किया है। तो रानी गैडिलियो कौन थी? तो रानी गैडिलियो जी जो थी वो है जो मणिपुर में बॉर्न हुई थी और वो रोंगमे ट्राइब को बिलोंग करती थी। क्योंकि वहाँ पर स्कूल्स की फैसिलिटी नहीं थी इसलिए उनकी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। हिराका मूवमेंट बहुत फेमस मूवमेंट है। हिराका मूवमेंट को उसको उन्होंने ज्वाइन किया। एक्चुअली वो एक स्पिरिचुअल मूवमेंट थी जो कि नागा ट्राइबल रिलीजन को रिवाइव करना चाहती थी, लेकिन बाद में वो मूवमेंट जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट बन गई क्योंकि वो ब्रिटिश के साथ फाइट करने लगे। फिर उसी मूवमेंट में वो लीडर बन गई गेरिल्ला फोर्सेस की और इवन बाद में हेराका मूवमेंट की लीडर भी बन गई। ठीक है। उस मूवमेंट में अर्ज किया जाता था कि लोगों को कहा जाता था कि आप टैक्स पे करना बंद कर दो, फॉरेनर्स को सबमिट करना बंद कर दो, क्योंकि वो इस मूवमेंट से रिलेटेड थी। फिर जो है क्रिश्चियन मिशनरीज़ के अगेंस्ट बहुत बोलती थी वो, इसीलिए ब्रिटिश ने उनके खिलाफ एक मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है पकड़ कर दिया। जवाहरलाल नेहरू जी उनको 1937 में मिले और रानी का टाइटल उनको जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने ही दिया था। ठीक है। अब वो अपनी पूरी लाइफ में जो है वो नागा नेशनल काउंसिल के अगेंस्ट रहीं, जो कि एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट थी, जो कि इंडियन यूनियन के साथ नहीं रहना चाहती थी मूवमेंट। वो उसके अगेंस्ट रहीं। वो बल्कि कहती थी कि ज़ेलियांगरोंग टेरिटरी होनी चाहिए इंडियन यूनियन के अंदर ही। ठीक है। तो मतलब वो नागा राइट्स के बारे में बात तो करती थी, बट वो कहती थी विद इन इंडियन यूनियन ये राइट्स मिलने चाहिए। उनको ताम्रपत्र फ्रीडम फाइटर अवार्ड 1972 में दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, विवेकानंद सेवा अवार्ड दिया गया और उनको बिरसा मुंडा अवार्ड भी पोस्टह्यूमसली दिया गया था। ठीक है। और जो नागा नेशनलिस्ट थे वो उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा से ये कहती थी कि इंडियन यूनियन के साथ रहकर ही नागा जो है ट्राइब्स जो है वो रह सकती हैं, इंडियन यूनियन के साथ ही उनको रहना चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनेस्को ABU पीस मीडिया अवार्ड 2021। तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के कुछ प्रोग्राम्स हैं, उनको ये यूनेस्को का ABU पीस मीडिया अवार्ड मिला है। तो कुआलालंपुर में ये सेरेमनी हुई और वहाँ पर उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये डेफिनेटली लीडिंग द वे, ये दूरदर्शन का एक प्रोग्राम है। और लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी जो है, आई एम सॉरी, लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइव्स, ये ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम है जिसको ये अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है। तो ये अवार्ड जो है यूनेस्को ने एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जो है उसके साथ मिलकर शुरू किया था, टुगेदर फॉर पीस इनिशिएटिव। और कुआलालंपुर में जो है इस सेरेमनी को किया गया। 33 कंट्रीज़ 5 कॉन्टिनेंट्स की जो है वो रिप्रेजेंट की, उनमें से जो है अवार्ड्स दिए गए। ठीक है। रेडियो, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए ये कंपटीशन को ओपन किया गया और इसमें जो है आपके इंडिपेंडेंट एथिकल जर्नलिज्म जो है इससे रिलेटेड जो है टॉपिक्स पर जो है ये अवार्ड्स दिए गए हैं, ताकि हम इक्विटेबल और फेयर सोसाइटीज़ से रिलेटेड कंटेंट बना सकें और उससे रिलेटेड जो है कंटेंट अगर बना है उसको रिकॉग्नाइज करके उसको अवार्ड दिया जा सके। ठीक है। तो क्रिएटिव कंटेंट को ऑनर करने के लिए ये अवार्ड्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड फिशरीज़ डे। तो अभी रिसेंटली भुवनेश्वर में वर्ल्ड फिशरीज़ डे सेलिब्रेट किया गया है, जिसमें कि ओडिशा जो है वो, आपको पता है कि फोर्थ लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में। आंध्र प्रदेश ऑफ कोर्स सबसे लार्जेस्ट है और यहाँ पर इसको वर्ल्ड फिशरीज़ डे को सेलिब्रेट किया गया। तो 21 नवंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ये, और सबसे पहली बार इसको नवंबर 2015 में सेलिब्रेट किया गया था। तो इस साल का थीम है मिक्सचर ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री, नेचर एंड एनवायरनमेंट एंड अ ग्रेटर फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें कुछ अवार्ड्स को भी अनाउंस किया गया है, जैसे बालासोर जो है ओडिशा में, उसको बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट माना गया है। आंध्र प्रदेश, अब आपको ये तो पता ही है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ फिशरीज़ यहीं पर होती है, तो बेस्ट मरीन स्टेट इसको बनाया गया है। फिर बेस्ट इनलैंड स्टेट का अवार्ड जो है वो तेलंगाना को मिला गया है। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो एक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक कोलैबोरेशन के साथ एक रिपोर्ट पेश की है, हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो अर्बन एरियाज़ में पुअर लोग हैं उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब वो कितना जिएंगे, वो रिचेस्ट लोगों के कंपैरिजन में मेल के कंटेक्स्ट में वो 9.1 ईयर्स कम है और विमेन के कंटेक्स्ट में वो 6.2 ईयर्स कम है। ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है उसने
हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और हेल्थ वल्नरेबिलिटीज़, इनइक्वालिटीज़, जो इन सब जो है एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हुए ये रिपोर्ट को तैयार किया है। और इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन अब अर्बन एरियाज़ में रहती है, और ये नंबर हर बार बढ़ता ही जा रहा है हर साल। तो 30% ऑफ जो लोग अर्बन एरिया में रहते हैं वो पुअर हैं, ठीक है। तो इसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सेंसस और स्टेट लेवल ऑफिशियल से डेटा लिया गया और उसके बेसिस पर ये रिपोर्ट को तैयार किया गया है। अब ये कुछ रिकमेंडेशंस भी दे रही है रिपोर्ट, जैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और गवर्नेंस के थ्रू हम जो है स्ट्रेंथन कर सकते हैं हेल्थ केयर सिस्टम्स को। डायनामिक डेटाबेस होना चाहिए, हेल्थ केयर को हम कैसे इंप्रूव करें, तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिस्कस की गई हैं, ये रिकमेंडेशंस दी गई हैं, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को एक बेटर मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि ये दो आपस में दोनों कोऑर्डिनेट करके काम कर सकें। फिर फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द पुअर जो है उसको कम करने के लिए भी पॉलिसी मेजर सजेस्ट किए गए हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ INS विशाखापट्टनम। तो INS विशाखापट्टनम एक प्रोजेक्ट 15B का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसको कमीशन किया गया रिसेंटली इंडियन नेवी में, रक्षा मंत्री के प्रेजेंस में इसको जो है वो कमीशन किया गया है। तो टोटल ना 4 शिप्स का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सबसे पहला ये विशाखापट्टनम बन चुका है और इसको कमीशन भी कर लिया गया है। 2011 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और ये कोलकाता क्लास के बाद जो है अब ये विशाखापट्टनम क्लास ऑफ शिप्स बनाए जा रहे हैं। तो उसमें जो सबसे पहली शिप है वो डिलीवर कर दी गई है, ठीक है। तो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने इसको बनाया है। मैजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई बेस्ड ने इसको जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। डिज़ाइनिंग जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने की थी, ठीक है। अब इसमें 4 पावरफुल गैस टर्बाइंस लगी हुई हैं। ऑलमोस्ट 75% इंडिजिनस कंडेंट है, इसका मतलब सब 75% ये शिप जो है वो इंडिया में अपने ही सामान से बनाई गई है। 163 मीटर्स लॉन्ग वॉरशिप है। 7400 टन्स की डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कितना पानी डिस्प्लेस करती है जब चलती है तो। और 4 पावरफुल गैस टर्बाइंस लगी हैं इसमें, अच्छे अच्छे जो है आपके एनहेंस्ड स्टेल्थ फीचर्स हैं इसमें रडार्स के। और फिर ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर कंडीशन सब में सबसे लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। इसमें इंडिजिनस वेपन्स भी लगाए गए हैं कुछ, ये सारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ब्रह्मोस, टॉर्पीडोज, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, फिर ये सुपर रैपिड गन माउंट, ये सारे इंडिजिनस वेपन्स हैं जो इस जो है आपके INS विशाखापट्टनम में लगाए गए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021। तो इंदौर जो है वो 5वीं बार यूनियन हाउस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जो है एनुअल क्लैनलीनेस रैंकिंग स्वच्छ सर्वेक्षण में 5वीं बार पहले स्थान पर आई है। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो है उन्होंने जो है क्लीनेस्ट स्टेट का ऑनर जो है वो छत्तीसगढ़ को तीसरी बार दिया है। वाराणसी जो PM मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको क्लीनेस्ट गंगा सिटी का अवार्ड मिला है। सूरत और विजयवाड़ा जो है वो सेकंड और थर्ड प्लेस पर आए हैं, फर्स्ट पे इंदौर आया है, ठीक है। 100 लोकल बॉडीज़ वाली कौन सी स्टेट्स हैं जो बहुत अच्छा इंप्रूव किया है जिसने, वो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। झारखंड जो है वो क्लीनेस्ट स्टेट की कैटेगरी में आई है, जिसमें 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। फिर कम लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन की कैटेगरी में महाराष्ट्र की वीटा जो सिटी है उसको फर्स्ट अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इसमें अब आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया जो है वो क्लीनेस्ट कैटेगरी में आया है, जिसकी 1 to 3 लाख पॉपुलेशन है। नोएडा जो है वो मीडियम साइज सिटी में सबसे क्लीनेस्ट सिटी मानी गई है, ठीक है। तो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस सर्वे को कंडक्ट किया है, और 28 दिन तक ये सर्वे कंडक्ट किया गया। 4 करोड़ से ऊपर लोगों से इसमें जो है वो सवाल पूछे गए, और 4320 सिटीज़ में ये सर्वे कंडक्ट किया गया, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Rani Gadenliu. So Union Home Minister has recently inaugurated a Rani Gadenliu Tribal Freedom Fighters Museum in Manipur through video conferencing. So who was Rani Gadenliu ji? So she was born in Manipur and she belonged to the Rongmei tribe. Because of lack of schools, she could not complete her education. But when she was just 13 years old, she joined this Haraka movement. So this was a spiritual movement which wanted to revive the ancient Naga tribal religion. Later on, it was transformed into a political movement, which because they wanted to fight the British, whom they considered as foreigners.
So she became the leader of guerrilla forces of this movement, and later on she also became the leader of this movement, and she urged people to stop paying taxes and submitting to the foreigners, because she was against the Christian missionaries and she was associated with this Haraka movement. The British conducted a massive search operation to arrest her, and later on in 1932 she was arrested and sentenced to life imprisonment. So uh, Jawaharlal Nehru ji met her in 1937, and she was given the title of Rani by Nehru ji. And she was vehemently against the Naga National Council, which was a secessionist movement, and she wished that a separate Zaliangrong territory within the Indian Union can be constructed. She was awarded the Tamrapatra Freedom Fighter Award in 1972. She was even awarded the Padma Bhushan, Vivekanand Seva Award, as well as the Birsa Munda Award posthumously. So, because she was against the Naga National Council or the secessionist movement of Nagas, she is not. Her stature is ambiguous in their culture, or in their these among these Naga nationalists. So she was not. She was patriot, and she was against secession from the Indian Union. That's why these Naga nationalists are do not consider her a very close to them. Okay. So now let us see the next topic, which is UNESCO ABU Peace Media Award 2021. So two programs of Doordarshan and All India Radio have secured prizes or awards of among the UNESCO ABU Peace Media Award, and from the Doordarshan, definitely leading the way was the program which won an award, and from the All India Radio, this Living on the Edge, the Coastal Lives was the program which won another award in this particular category. Okay, so these awards are given by UNESCO in collaboration with Asia Pacific Broadcasting Union. There is an initiative, namely Together for Peace initiative, under which these awards are given to such categories of programs. So the ceremony was recently held in Kuala Lumpur in Malaysia, and these awards are open for radio, TV, and other digital platforms. And almost 33 countries across 5 continents participated in this award ceremony. Okay, so these awards are basically important to highlight and promote crucial role of independent, ethical journalism and citizens media literacy. So basically it honors the content or creative content which showcases or which strives for equitable and fair societies in the world. So it honors such content which is making its mark in the society. So two programs from India have been recently awarded under this in this award. Okay, so the next topic is World Fisheries Day 2021. So the recent World Fisheries Day, which is celebrated annually on 21st November, has been celebrated in Bhubaneswar, that is in Odisha. So Odisha is already the fourth largest fish producing state. You already know that Andhra Pradesh is the largest in India, and this World Fisheries Day is just celebrated to recognize the contribution of millions of fisher folk, fisher farmer, and people who are involved in this fisheries trade across the world. And this the theme of this day is mixture of fishing industry, nature and environment, and a greater focus on biodiversity. So the first time this day was celebrated was in 2015, and recently when this day was celebrated in Odisha, some awards were announced. So Balasore, that is a part of Odisha, has been awarded as the best marine district. Andhra Pradesh naturally becomes the best marine state, and best inland state award for fisheries is given to Telangana. Okay, so now let us see the next topic, which is life expectancy. So Azim Premji University had collaborated with some regional NGOs, and they have presented this healthcare equity in urban India report. And this report is saying that amongst the poorest of people in urban areas, the life expectancy rate is lower by 9.1 years among men and 6.2 years among women. So
This report has explored health vulnerabilities and inequalities of access to healthcare facilities in India. So, availability, accessibility, and cost of healthcare facilities has become the metrics upon which this report has been prepared. So, this report is saying that about one third of India's population lives in urban areas, and amongst these, the population of urban areas, 30% of people living in urban areas are poor. The population of urban areas is increasing every year, and the study has collected data from several cities as well as cities. National Health, Family and Health Survey, census, inputs from the state level officials, and through interactions with civil society organizations of several cities like this: Mumbai, Bengaluru, Surat, Lucknow, Guwahati, Ranchi, and Delhi. Okay, so this report has also given some recommendations as to how we can strengthen the healthcare facilities in these cities. So it has said that community participation and governance becomes important. So we have to strengthen it. So we have to compile a dynamic database of health and nutrition status in the country, including the comorbidities or people with comorbidities, so that we can focus on such vulnerable populations. Healthcare provisioning has to be strengthened. We have to take policy measures to reduce the financial burden of the poor. And there must be better coordination between public healthcare services as well as the private healthcare institutions. Okay, so these are the recommendations of this report. So now let us see the next topic, which is INS Vishakhapatnam. So we discussed it just few weeks back, that INS Vishakhapatnam was delivered to the Indian Navy, and now it has been commissioned by the Navy in the presence of Raksha Mantri ji near Naval Dockyard of Mumbai. Okay, so what is the background of this INS Vishakhapatnam is that since January 2011, a contract of 4 ships under Project 15B was given to Mazagaon Dock Shipbuilders Limited, and they have to construct these 4 ships. So the first ship has been delivered now. So earlier, this Vishakhapatnam series of ships or class of ships is a follow-up of Kolkata class of destroyers, which were commissioned in the last decade. So the design of this ship is created by Directorate of Naval Design which is a part of Indian Navy. And this ship has been constructed by Mazagaon Dock Shipbuilders Limited, based in Mumbai. Okay. So the ships which will be constructed now are Vishakhapatnam, Mormugao, Imphal, and Surat. So amongst all these, Vishakhapatnam has been recently delivered now, and the next 3 ships will be Mormugao, Imphal, and Surat. Okay, so this ship is 163 meters long, and it can displace 7,400 tons of water. It has an overall indigenous content of about 75%. It has 4 powerful gas turbines. It has enhanced stealth features. It can engage the enemy in nuclear, biological, and chemical warfare conditions. There are several weapon systems, all of them are indigenous in nature, have been installed on this INS Vishakhapatnam. So Vishakhapatnam, for those who do not know, it is the city of destiny, and this INS Vishakhapatnam would be able to hold about 315 personnel on its platform. Okay, so now let us see the next topic, which is Swachh Sarvekshan Award 2021. So Indore has once again, for the fifth time, has been awarded as the cleanest city of India in the Union Ministry of Housing and Urban Affairs ranking, annual cleanliness ranking, which is also called the Swachh Sarvekshan survey. So the state of Chhattisgarh has become the cleanest state for the third time. PM Modi's constituency Varanasi has become the cleanest Ganga city amongst the states with over 100 urban local bodies. Maharashtra and Madhya Pradesh have been ranked second and third. So Jharkhand has been judged as the cleanest state with less than 100 urban local bodies. Amongst the cities with population less than 1 lakh, Maharashtra's Vita has been declared as the cleanest city.
New Delhi Municipal Corporation area has been ranked as the cleanest in the category of cities with 1 to 3 lakh population, and Noida has been ranked as the cleanest among the medium-sized cities. Okay, so this survey is conducted by the Union Ministry of Housing and Urban Affairs, and this time this survey was conducted in 3,320 cities. Over a time span of 28 days, and a feedback from 4.2 crore people were recorded. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.